If we look at the entire this gamut of smart devices, personally, I believe that, of course, laptop is at the bottom of the pyramid in terms of, I would say, the rate of innovation that has happened over these years. मुझे अभी भी लगता है कि लैपटॉप मोर और लेस वैसे ही है जैसे हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं. बट द अदर कैटेगरी जहाँ पे मुझे लगता है कि देर इज स्टिल नीड टू इनोवेट मोर इज स्मार्ट टीवीज. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने कनेक्टिविटी कर दी, एप्स डाल दी एंड दैट्स इट. मुझे लगता है देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन, स्पेशली बिकॉज the content consumption patterns are changing. For instance, हम लीनियर चैनल्स में पहले यूज करते थे टीवी को, लाइक हमको पता होती थी कि भाई चैनल नंबर 99 इज दिस, चैनल नंबर 40 इज दिस, and it was easy. But then OTT apps aane lagi, and that's where content discovery became a challenge. And it's not that some of the OEMs have not worked in this space. They have done pretty well in making content availability easy. But मुझे लगता है yes, I think, और मैं कुछ लोगों से एक्सपर्ट से बात भी कर रहा था कि yes, content discovery is an area जहाँ पर there is still need to work more, and शायद AI will have a role to play. बट बियॉन्ड दिस मुझे एक और जो इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है स्मार्ट टीवी में, दैट इज कि देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट बिटवीन द एक्सपीरियंसेस. बिकॉज देखिए, हम एक मोबाइल फर्स्ट कंट्री है, हमारे पास, एंड मेनी टाइम्स मोबाइल ओनली, मेनी होम स्टिल हैव स्मार्टफोन एज देयर फर्स्ट स्मार्ट गैजेट, एंड फॉर मेनी ऑफ देम इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द ओनली स्मार्ट गैजेट एट होम. तो जो वो एक्सपीरियंस हमें उस पे कंटेंट की मिलती है, दैट समटाइम्स डज नॉट गेट पैंड आउट टू स्मार्ट टीवी. अगर आप घर में कुछ देख रहे हैं स्मार्ट फोन पे, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फील दैट ओके, दिस पॉडकास्ट इज इंटरेस्टिंग, लेट ऑल ऑफ अस वॉच इट टुगेदर, और देयर कुड बी एनी अदर एंटरटेनमेंट कंटेंट आल्सो. तो वो एक्सपीरियंस अचानक से शेकअप हो जाती है, क्योंकि आपने मोबाइल, आपका हाई अच्छा स्पेक्ट होता है, अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस दे रहा होता है, और अचानक से वो एक्सपीरियंस आपको टीवी पे नहीं मिलती है. द सेकेंड थिंग इज, सो देर इज स्टिल अ गैप बिटवीन, आई थिंक, the immersive experiences that smartphones are capable of vis-a-vis the experiences that the smart TV can deliver. And मैं ये relatively same prices का बोल रहा हूँ. So if I'm looking at say a smart TV in the mid range, I am also looking at the smartphone in the mid range. So वो comparison, I am cognizant of that. The second thing which I want to highlight, or the third thing which I want to highlight over here is कि now the content creation has sort of democratized. Okay. Earlier there used to be just some content houses or production houses जो content own करते थे, produce करते थे, and आपको एक बहुत homogenized network kind of environment में content creation मिल पाती थी. So what do I mean by that? कि हर एक के पास स्टूडियो होता था, उनके इक्विपमेंट गैजेट मोर और लेस सिमिलर होते थे, तो एक हार्मोनाइज लेवल ऑफ आउटपुट मिलता था आपको इन टर्म्स ऑफ वीडियो एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ ऑडियो एक्सपीरियंस. नाउ दैट्स नॉट द केस. देयर इज अ लॉट ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट. सो आई माइट बी यूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ फॉर इंस्टेंस कैमरा, ऑडियो, mic, and lighting effects, and other things, and vis-a-vis somebody else might be using better than this, or maybe inferior to this. तो कॉन्सिक्वेंशियली क्या हो रहा है कि हर एक का ऑडियो एंड वीडियो आउटपुट डिफरेंट निकल रहा है. अब जब वो देख रहे होते हो, कंज्यूम कर रहे होते हो ऑन द सेम टीवी, तो इट्स नॉट, यू डोंट गेट दैट सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. मेनी अ टाइम्स आई हैव नोटिस्ड दिस. अगर हम कोई पॉडकास्ट देख रहे होते हैं ऑन यूट्यूब, तो अच्छा, इफ यू आर नॉट यूजिंग अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ यूट्यूब, तो एड चलने लगता है, तो ऑल ऑफ ए सडन आप देखो कि उसका ऑडियो लेवल अचानक से चेंज हो जाता है. वीडियो भी होता है, बट वीडियो आप उतना ओके, यू विल नोटिस इट, बट ऑडियो तो अचानक से लेवल अप हो जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी रिमोट पकड़ने लगते हो, या तो म्यूट कर देते हो या कम करते हो. सो दिस कीप्स ऑन गोइंग, एंड लुक एट व्हाट काइंड ऑफ बैड एंड टेरेबल एक्सपीरियंस इट इज कि आपको ये अचानक से ऐसे करना पड़ता है. नाउ देयर आर टीवीज जो वो वॉल्यूम लेवल, ऑटो लेवलिंग ऑफर करते हैं, बट somehow I don't find them very effective. मुझे बहुत रेयरली, मुझे याद है in all these years, एक मेरे को याद है, it was perhaps from LG, एक टीवी था जिसमें थोड़ा वॉल्यूम लेवलर अच्छा काम करता था, बट मोर और लेस मैंने वो अच्छा कभी नहीं देखा है.
Now, this is something where I feel AI can play a role. For instance, you could have some more sensors added to smart TV, जो could understand the maybe dimensions of the room, maybe the noise level of the room, and accordingly, and at the same time, the the kind of output of the video, especially the audio levels, and basis that it could level the audio or tune the audio of different kind of videos being kind of projected on your smart TV, ताकि यू गेट अ वेरी आई वुड से होमोजेनाइज. आई अंडरस्टैंड शायद बिल्कुल इसको उसको एक ही लेवल पे देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एटलीस्ट एट दिस स्टेज. दैट माइट नीड सम मोर intelligence being computed out there, but I'm sure that right now there is some room that where you can look at इसको एक homogenized experience दे पाए. और ये जो एक बहुत बड़ी I would say it is a difficult kind of experience, and it is hampering the overall TV viewing experience of consumers. तो यहाँ पे आई सी दैट देयर इज अ रोल कि यहाँ पर एक AI इंटरवेंशन कर सकते हैं ना, जो कि इसको एक हार्मोनाइज्ड एनवायरनमेंट पे लाए. इसके साथ साथ जो मुझे एक और चीज लगती है स्मार्ट टीवी में, देखिए ऑल्दो देयर इज कंटेंट मेटा डेटा, देयर इज टैगिंग, उसका कंटेंट टैगिंग बाय suitability ऑफ एज वेज, वो सब होता है, बट आजकल का कंटेंट शायद वैसे चलता ही नहीं. यू नेवर नो, और मे बी द रूल्स हैव चेंज, यू नेवर नो कहाँ पे क्या आ जाए. तो वहां पे मुझे लगता है कि अगेन basis who is watching, and there could be some content filtering using that kind of maybe an algorithm. It could be maybe using a camera, where it could at least look at who is switching on the TV, what is the likely age group of the person, and accordingly appropriately push the content and filtering the other content out. या कभी आपको कल्चरल सेंसिटिविटीज का ख्याल रखना पड़ता है. मे बी दैट कुड ऑल्सो बी अनदर वे where AI could come in and without maybe creating regional copies of the same content, it could automatically trim those kind of scenes from the movie or any other video and make it culturally appropriate to wherever the person is watching this content. I'm sure there will be many other examples जहाँ पर हमें लगता है कि smart TV can be improvised further and there is room for improvement and innovation. But these were, some of the thoughts which I could collect off basis some of the recent experiences and of course some discussions. So that is where I feel that there is a need कि स्मार्ट टीवी में और किया जा सकता है और इनोवेट किया जा सकता है, एंड वी कुड क्रिएट मोर वैल्यू देन जस्ट गोइंग आफ्टर दिस स्पेक्स कि चलो साइज बढ़ा दो एंड मे बी रेजोल्यूशन बढ़ा दो. आई थिंक दैट्स नॉट इनफ. वी नीड टू रियली वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर साइड and create a real value proposition of smart TV for the consumers. That's what I had in today's Tech Byte. I'll be back with you. Till then, enjoy tech.